guys, I'm Shaurya. Today I'm gonna be giving you the overview of the solar system and the 8 planets. The 8 planets are the big ginormous sun is very, very hot. It's like almost 1,000,000 degrees Celsius. And it's very far. 93 million miles from the Earth. Okay. टीचर्स की ड्रेस है First planet is Mercury. It is the closest to the sun. It is very, very rocky. So it has a lot of craters. A crater is like a shooting star which crashes on the planet and then the planet is depressured. Yes. Yes, all of you know that the first planet is Mercury. Yes, continue. Then And it's very famous for its craters. So a crater is like when that shooting star or in any shooting star, it like flashes on the planet and then the planet is depressured. yes, all of you know about craters. Have you know? Yes, what are they? Anyone tell me? What are craters? These are the shooting stars, am I right? Yes. These are the shooting stars. Yes, continue. And when that crashes on the planet, it gets depressured. Yes, जब ये planet पे crash होते हैं, then it's Depressured. depression. Okay, continue. Yes, This- continue. Second planet is Venus. Yeah. Second planet कौन सा है आपका? Venus. Yes. It's very famous for volcanoes. And that's why it's also the hottest planet. Yes. Venus क्या है? सबसे hottest planet है. Yes. Why it's hot? Because the volcanoes' clouds, they trap the heat inside, and when they do that, the heat which comes in, it stays on the planet. And it's very famous for calling the 1,000,000 volcano planet because it has 1,000,000 volcanoes on itself. Some points I'm not getting. So Venus is Venus पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं, अराउंड 1000 वॉल्केनोज, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है. ठीक है. The third planet is Earth. It is the only planet which we know which can life exist on, like we are on the planet Earth. So तीसरा प्लेनेट है अर्थ. तो अर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अर्थ को धरती जो बोलते हैं, और वह जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ लिविंग बींग्स रहते हैं. Fourth planet is Mars. It is called the red planet. And it is the last of the inner planets. ओके. सो जो फोर्थ प्लेनेट आता है वो है मार्स. मार्स को हम रेड प्लेनेट या लाल ग्रह भी बोलते हैं. एंड दिस इज जो कि इनर प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप प्लेनेट्स देखेंगे तो 8 प्लेनेट्स कहते हैं. तो जो शुरुआत के जो 4 प्लेनेट हैं जो इसने बताए, मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ, और उसके बाद मार्स. ठीक है, तो ये इनर प्लेनेट्स बोलते हैं. Mars is also a middle planet. I think. करेक्ट. And it has the highest mountains in the solar system. Say like 8 kilometers. यस. तो मार्स के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, और जो कि करीब 8 किलोमीटर ऊंचे हैं. ऊंचाई तक जाते हैं.
काफी ऊंचे प्लेनेट। It has all seasons like Earth. So, say Earth has 4 seasons, the same of Mars. The 5th planet is Jupiter. वेट सेकंड। सो मार्स के अंदर 4 सीजन होते हैं, 4 मौसम जो अपने अर्थ पे होते हैं, जिसकी वजह से काफी कुछ सिमिलर रहता है अर्थ की तरह। ठीक है, अब 5th प्लेनेट। 5th planet is Jupiter. And it is the beginning of a gas giant. And it is the biggest planet. A gas giant is like a planet which is made up of gas, hydrogen, and helium. सो जो नेक्स्ट प्लेनेट है 5th प्लेनेट विच इज जुपिटर, एंड जुपिटर को गैस जायंट या धुएं का गुब्बारा भी बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, एंड इट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम And gas. एंड गैसेस, अदर गैसेस। ओके, It is very famous for its big red spot. It's a red spot. It's a tornado, which is as big as 3 Earth, and it is raging for over 400 years. ओके, सो आपने अगर उसका जुपिटर का फोटो देखा होगा तो उसके ऊपर एक लाल धब्बा दिखाई देता है। जो लाल धब्बा है वो करीब 3 से 4 अर्थ के साइज के बराबर है, एंड वो एक्चुअली एक जो टोर्नेडो, अगर कहते हैं जैसे हिंदी में बवंडर या तूफान है, और वो करीब 400 साल से है अभी तक जो दिख रहा है। And it's big as 3 Earths. बिगेस्ट 3 अर्थ, 3 अर्थ के बराबर है करीब उसका साइज। And it's very famous for its moons. It has the most, 67 moons. ओके, सो जुपिटर इज आल्सो फेमस फॉर इट्स मून्स। मून मतलब जो आपने यहाँ पे चांद जो बोलते हैं हिंदी में, तो उसके 67 मून्स हैं जुपिटर के। अपनी अर्थ पर कितने मून है? तो वहाँ जुपिटर पे 67 मून है। 67 हाईएस्ट नंबर। The 6th planet is called Saturn. It's famous for its rings because it has 6 very big rings. They are made of rock, dust, and ice. It is also a gas giant. सो द नेक्स्ट प्लेनेट जो है वो है सैटर्न। सैटर्न इज आल्सो वेरी बिग, बहुत बड़ा साइज का है जुपिटर की तरह ही, और उसके चारों तरफ रिंग्स देखी होंगी आपने, देखिए 6 रिंग्स हैं, और जो 6 रिंग्स हैं वो बनी हुई है पत्थरों से, गैस से, और आइस के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं उससे मिलके बनी हुई है, जो चारों तरफ घूमती रहती है उसके, तो वो उसमें घूमते रहते हैं। तो ये है 6th प्लेनेट। और The 7th planet is Uranus, and also the coldest planet. So it also has rings, but because a long time ago an asteroid crashed into it, so that's why you probably were wondering why it leans on its side. ओके, I'll explain. So जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है यूरेनस। तो यूरेनस भी काफ़ी बड़ा और ठंडा है, वो भी गैस से बना हुआ है, और उसके भी चारों तरफ रिंग्स हैं जैसे सैटर्न के ऊपर थी, बट उसमें एक आप देखोगे, अगर उसका फोटो देखते हो तो रिंग्स जो है उसकी थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसे ही बता रहे हैं ना ये। तो वो उसका रीज़न ये है कि उसके ऊपर एक कोई एस्टेरॉइड था, काफ़ी साल पहले उससे टकराया था, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो वो थोड़ा रिंग्स जो है उसकी इन्वर्टेड टाइप रिंग्स घूमती है यूं, और सैटर्न की देखोगे तो आप यूं घूमती है। तो वो ये बताया। Is there any moons on this Uranus? Yes, 27 moons. So Uranus के 27 moons है। And why it's light blue? It's because of its methane gas. Oh. The sun reflects it red of the heat, and because Uranus is the color blue and it has methane gas, it reflects it out blue. Okay. So जो यूरेनस का कलर अगर आप देखोगे फोटोज में, तो वो नीले रंग का होता है। तो नीले रंग का रीजन ये है कि उसके अंदर मीथेन गैस होती है, और जो सूरज से जो रोशनी आती है वो उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी वजह से उसका कलर ब्लू होता है। ठीक है। The 8th planet is Neptune. Neptune is the last planet. It has a hurricane in
itself. It's called the blue hole, and it can go to like 5,000 kilometers per hour. 5,000. Okay. Wait. So the last planet जो हम बोलते हैं सोलर सिस्टम का वो है नेपट्यून और नेपट्यून के अंदर क्या है बताया आपने ब्लू वो It भी has a blue hole, which is a hurricane. उसके अंदर अगर आप फोटो देखेंगे उसमें एक नीले रंग का एक गड्ढा दिखाई देता है जो कि एक हरिकेन है। हरिकेन एक तरह का तूफान होता है और जिसकी वजह से वो ब्लू होल दिखाई देता है उसके अंदर। ठीक है Which can go very fast to 5,000 kilometers per hour. और वो बहुत तेज घूमता है जिसकी स्पीड है 5,000 किलोमीटर पर आवर। Is there any moons on Neptune? 13. It- 14, I don't know. Okay, so नेपट्यून के 13 से 14 मून्स हैं। 13 to 14? Yeah, 14. So are these the only planets on the solar No. system? Or No, they're not. What about Pluto? Is it still a planet or not? It's not a planet. Why? Because in 2009 in the US, scientists had a conference about it, of something weird happening into it. And I have three reasons to give you. Wait, I'll explain them. तो बच्चों ये बताओ कि प्लूटो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का या नहीं? ओके, तो ये बता रहे हैं कि 2009 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में जहाँ पे साइंटिस्ट ने डिस्कस किया कि हमको प्लूटो को ये देखना है कि वो प्लैनेट को रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि उनके पास उसके 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से वो प्लैनेट में कंसिडर नहीं करते उसको। ठीक है, तब Yes. can explain? So the 3 reasons are, it's very small. Like there's a certain size for a planet to be a planet. Secondly, its moon is almost as big as itself. Quirin is like big as itself. And some people call it a double planet. And the last reason is its orbit around the sun. Every 40 years, it will meet Neptune and Pluto will become the 8th planet and pushing Neptune to the 9th planet. And every 80 years that will happen. ओके, सो जो 3 रीज़न दिए साइंटिस्ट ने जिसकी वजह से ये बताया गया कि प्लूटो को हम प्लैनेट में नहीं रखेंगे, तो वो ये है कि पहला तो प्लूटो का जो साइज़ है वो बाकी प्लैनेट्स की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि अगर आपने प्लैनेट्स देखे होंगे सारे बड़े बड़े हैं ना, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, बट प्लूटो बहुत छोटा है, छोटा बच्चा है। तो सोचते हैं कि इस छोटे से बच्चे को आप एडल्ट कैसे कह सकते हो। दिस इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि उसका जो मून है, मून का जो साइज़ है वो उसके खुद के साइज़ से बड़ा है। जैसे किसी का सन है वो अपने डैड से भी बड़ा है, तो जिसकी वजह से वो ये बोला गया कि वो उसको डबल प्लेनेट भी बोलते हैं, वो डबल साइज़ का है, मतलब दोनों को मिला के साइज़ काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और तीसरा ये है कि उसकी जो एक्सिस है जिस पे वो घूमता है वो एक्सिस बाकी जो प्लैनेट्स एक डायरेक्शन में घूमते हैं तो इसकी एक्सिस पे वो उसको टकराता है, ऐसे करके क्लैश होता है बीच में, और जिसकी वजह से वो कई बार नेपट्यून को भी पीछे कर देता है। तो नेपट्यून कई बार 9th प्लैनेट में भी कंसिडर हो जाता था एवरी 8 इयर्स। तो ये अभी 40 इयर्स, ओह सॉरी 40 इयर्स। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से प्लूटो को हम प्लैनेट में कंसिडर नहीं करते हैं, बट देयर इज समथिंग मोर अबाउट, यू कैन टेल लाइक। And it takes a very long axis, 248 years,